Thank you, Yeah. ma'am. Thank you so much. My screen is visible, right? Yes, ma'am, your screen is visible. You can start. Good morning, everybody. Good morning, all. So, welcome to the session. Yesterday, we have seen the very important feature of Word, and it is not only available in the Word, it is also available in the Word, Excel, PowerPoint also, and in fact, the MS Access also. So, just want to give a small brush up of that feature that is known as macro. The feature is known as a macro. Exactly, the macro is what? It is just a recording and replaying again and again. Like, for example, in the afternoon, like after the session or maybe the tomorrow, you want to listen my lecture, then you need a recording, right? So same thing in a Word, Excel, PowerPoint. We can record our action and then you can replay it again and again. But definitely for the replaying, you need some software or like some button for the play. So same thing in a Word, Excel, PowerPoint. If you want to record our action, so we need a one shortcut key or we need a one button or both. Okay. So it is available in a view and then macro. Macro, while recording the macro, then because Word is not a recorder, na? Word is a tool for the text writing. So it is a tool for the text writing or document creating. So whenever we create the macro, then Word, in a Word, the coding will be there. In a Word, the coding will be there. Coding means what? Because the softwares are written in a programming languages. So that is known as a coding. And programming languages is just like English type languages. So Word support the VB language, that is Visual Basic Languages. So that's why when we create the macro, then while recording, in a Word, there is a functionality. It writes the code automatically. It writes the code, whatever you record. Okay. So just let's take a brush up again. So there is an option of macro, then record macro. Either you can start from here, either you can start from here. This is the ready button. That is the status bar. Even you can include one more tab in your tab toolbar. These are the tabs: home tabs, insert tab, draw, design, and then so many tabs. By default, 7 tabs are there. Then you can include a one more tab by customize your Word. How can you customize your Word? There is an option in a file, more options, and then there is an option of customize ribbon. In a customize ribbon, there are the tabs available. You can check from here. If you don't want some tab, then just untick that. If you want some more tab, then that tick it. Like I want to select the developer tab, so I should take here, then press OK. Then developer tab is here. Even you can write your own macro if you are aware with the Visual Basic Coding. So there are 3 ways to start the recording. The first one is a view, then macro, record macro. The second one is a from the status bar, there is a option of ready button. And the third one is if you have the developer tab, or you can include the developer tab in your ribbon, you can customize your ribbon. And then here is an option of macro. So from here you can start the record macro. Okay. So these are the 3 ways to start the recording. So just click here, developer and record macro. But as all of you are aware, whenever you want to perform some kind of task or like some kind of things, then you should have the objective clear in your mind, what we want to do, what we want to perform with the help of this macro. Yesterday I told you how can you create a one balance sheet format or trial balance format. So
I'm again going to give you that same example. So if we want to create the trial balance format again and again, then no need to create again and again, or no need to copy and paste, okay, from one document to another. So you can create a one button, or you can create a one shortcut key with the help of record macro. So this is my objective. So go to the record macro, assign the macro name. Macro name cannot be starts from number. Okay. Second, you cannot include the spaces between the word or the character, and you cannot include the specified characters. So I'm just assigning the name, that is trial underscore balance. Okay, this is my macro name, and I want to assign the shortcut key. So from the keyboard, then you can assign the shortcut key Control+1, then assign. So from here to here, the key is there. Then it is stored in normal.dotm. Yesterday I told you what is a DOT. That is the template extension. That is the template extension. And M stands macro enable template. Okay. Now I close it. Macro is like it started the recording. In a cursor pointer, you can check a one small icon. So that means your recording is going on. And instead of start recording, now here is a stop recording, and you can in between you can pause recording also. Insert, then you want insert this kind of table, and you want to type here the particulars, tab key, amount, because tab is a shortcut key to move from one cell to another. What is a cell? Where the row and column intersect each other, that area is known as a cell. Particulars, then amount. Then you can include the headings also. Don't write here the amounts. Then capital, purchases, then creditors, or you can include the reserves. After the purchases, there is the wages. Then here should be the creditors. Then salary. And then outstanding expenses. Okay. Then cash, bank, debtors. Okay. Now one more. You want here should be the total, and then total should contain a one formula, that is sum above. I already told you about the sum for formulas. So table layout formula, here you should write sum above. Above means ऊपर का sum हो जाएगा, right? Above. Then just copy it and paste it. Paste it. Okay. Then here you want one row should be inserted above, so that you can type here the headings, that is trial balance as on and 31st March. Okay. Then just select this, Shift F3, then again select it, Control E, that is a shortcut key for the. Okay, now I finished recording. So I should stop the recording. From where I can stop the recording? Either developer or view. Here is an option of stop recording. So I should stop the recording. If I want to pause something like something I also want, then I can pause here, stop recording. Okay, now what is the shortcut key I assign? I assign the Control+1. So here when I press Control+1, then see trial balance is there. When I open a new document and I press Control+1, then trial balance is there. And suppose I insert some figures. And
5 lakh, 60,000. Okay, now just right click, update field. Right click, update field. Why it is giving me only the 40,000? Because in between space is there. So I can write here the 0. Again, update. Is it? So now you can match it. Like for example, the difference is 5 lakh 20,000. So here 3 lakh. Here is 20,000. Here is 2 lakh. Then right click, update. Is it clear? So now we can check. We already seen how can we create a one shortcut key. Now you want instead a shortcut key as well as you want to button both. So here is an option in a developer. There is an option, or you can create if you want to assign the button in the, you can include the button in the quick access toolbar. Then there is an option in the quick access toolbar, customize quick access toolbar, then more commands, and here is a macro. And macro you created, that is a trial balance. Just add it and change the design. Modify, then just change the design. Whatever you want. It's not necessary, huh? Whatever you want. Just this one. Okay. And then okay. Now, when I want to create a new document and I want to include our trial balance, there is a trial balance. Okay. And even if you wish, then trial balance sheet is also there. Okay, this is also for the trial balance. Yesterday, I created a one balance sheet also. So here, I'm sure here is balance sheet. See, this is the balance sheet. Is it clear? So now this will reduce your work time. Okay, the macro, through the macro, you can reduce your work time. Is it clear? Is it clear? Anybody have some doubt? Hello? Anybody wants to ask something? So many students are there. If somebody check and concentrate on my work, whatever I completed here, then definitely if you have some query, then you can raise the query. How to add new tab, Vashim. Okay, Vashim. I'm going to tell you. Nilesh, your answer is no. What you want exactly? Write the clear and concise way. The question is should be in the clear and concise way, na? Mukti. Thank you, Mukti. Nilesh, write your question. Okay, Vashim. Your question is, ma'am, repeat the how to add a new tab. Okay, I'm going to repeat how to add a new tab. You can add a new tab, whether it is in a Word, whether it is in Excel, and everywhere. So just go to the file. There is an option of more than options. This is known as backstage view. In a backstage view, there is an option of customize ribbon. In a customized ribbon, these are the tabs. These are the tabs you can include in any kind of tab, or you can exclude any kind of tab. For example, you don't want home, insert, draw, design, layout, reference, only you want home. Then just untick it. Okay, Vashim? See, now the only you have the three or four like tabs, whatever there are ticked, no? The options are ticked there. See, customize ribbon. Okay, customize ribbon.
I'm sure now, Vashim, satisfied with the answer? Is it clear? Can you repeat the shortcut key created in the... No, see, we cannot create the shortcut key in the quick access toolbar. We can create the shortcut key for the macro. Okay. Nilesh, okay. Macro is easy compared in copy format. Yes, 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 Prince. So that's why it is included in your course. How to stop the recording? Okay. See, when you see here is an option of record macro. But when you record the macro, then it will convert it into stop recording. See, if you record macro, then from here you can assign the shortcut key. Okay, then assign and okay. Now the option is now converted into stop recording. Previously it was a start recording. Now it is a stop recording. Okay. Is it? Macro. Okay, Sakshi. Okay, I'm giving you the again explanation. Okay. So please concentrate. So when you want to create the macro, when you want to record the macro, then to record the macro, first you have to start recording. From where you can start the recording? View, macro, then start recording. Or developer tab, macro, start record macro. Okay, both are the same option. Suppose I started the recording. So first it is asking for the macro name. Just assign the macro name, whatever you want. For example, report. Okay, report. First para. Okay, first para. And then, okay, let me first check the what should I write here? Okay, I want to record the macro for the first para. Okay, so first of all,
Okay. Now please concentrate. Please concentrate. Usually, when we audit in a company now, then we have to make a one audit report, right? We have to make a one audit report. And in an audit report, usually this is our first para. Usually this is our first para. So first you have to write this para and record it. And just use the button for recording. So view, then macro, record macro, para 1. Okay, I'm typing here the para 1. Shortcut key, I'm assigning here control 9, assign and close. Okay, now I'm starting the writing. We have audited the company cost accounting system of, and here should be the company name. Company name. Okay, and then which comprises the balance sheet as at, or you can, because you are submitting here the cost accountant, so which comprises the inventory summary and stock a report. Complete a report. Okay, as at and then dates. As at, then you have to add the date here. Okay, then end the statement of profit and loss, statement of changes in equity and statement. Equity and statement. This is our, usually this is our first para, okay, of cash flows and fund flows. This is just a simple example, so that's why I'm completing here. And then the paragraph is from the independent and CMA, and then CMA cost auditor report. And its outline. Recording is going on, huh? The limitation is not there. You cannot record the more than that 100 words or like 200 words. Recording is not, like, limitation is not there. So that's why I'm giving you the example of the long para. Okay. Now you already aware with the scope of cost audit. Okay. And then second point should be there. The financial documents being
explained. Then the period covered. Okay. The last thing is the period covered. That's it. This is usually our first para. Okay, when I submit the report. And then just check the spelling and grammatical mistake also. Then I told you about the justified alignment, then Control J. Okay, justified alignment is it adjusts the now macro, stop recording. Now in a new document, whenever you want to create a audit report, then press Control 9. See, first para is there. So this is the way how you can create the. Is this clear? So that's why I have taken some time to create this paragraph. But you have to write first time, okay? Don't use the copy paste. Is it clear? Rivansh, I cannot like मैं इतना fast नहीं चल सकती, right? Because I have to teach you according to the schedule. So I cannot like कि मैं इतना जल्दी नहीं करा सकती, Rivansh. So don't feel bored. Just like take the advantage from this class. I'm sure this class is a very helpful for you people. Okay. Rivansh. Okay. So is it clear? First para, how I write the first para, how I create the shortcut key for the first para. Even I can see now, suppose I want here the balance sheet. So no need to balance sheet लेने की जरूरत नहीं है ना, मेरे पास तो क्या है, मैक्रो बना हुआ है, view, then macro. Suppose I forget, like मैंने यहाँ पे बटन नहीं डाला है, तो पहले बटन डाल लो या फिर view macro से जाके balance sheet को डाल दो. Here is a balance sheet. Now you want कि चलो बैलेंस शीट के पहले आपको ट्रायल बैलेंस डालना है. सो जस्ट फ्रॉम हियर यू कैन इंक्लूड द ट्रायल बैलेंस. देखो ट्रायल बैलेंस भी आ गया, आपका बैलेंस शीट भी आ गया, है ना. सो आपका टाइम कितना कम हो जाएगा, काम करने का टाइम जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा. देखो अब मैं कितनी जल्दी रिपोर्ट बना के दिखाती हूँ आपको. दिस इज द लाइक फर्स्ट पैरा के लिए मेरे पास क्या है, Control 9. फिर बैलेंस शीट के लिए क्या है मेरे पास, यहाँ पे जाएंगे बैलेंस शीट के लिए. अगर आपने शॉर्टकट की या फिर आपके पास वो बटन नहीं है तो फिर मेरे पास क्या है, ट्रायल बैलेंस के लिए. ट्रायल बैलेंस के लिए मेरे पास देखो क्या है, ऊपर बटन दिया हुआ है ना, ये यहाँ से क्लिक कर दिया. तो कितनी जल्दी मैंने रिपोर्ट बना ली, इतनी बड़ी रिपोर्ट. ओनली आपको छोटा मोटा एडिट करना है, दैट्स इट. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? है ना. तो मैक्रो का टॉपिक में खत्म कर रही हूँ. Anybody wants to know something? मैक्रो के लिए कुछ और आपको चाहिए क्या? Because macros are very useful, huh? Is it clear? खत्म कर रही हूं मैं इसको. Okay. Very good, very good, very good. चलिए. So the next topic is कोडिंग क्या होती है ना. इसी का मैक्रो का जो कोडिंग है वो कैसे देखते हैं, वो क्या होती है. That is known as VBA, Visual Basic Application. So to check the coding, डेवलपर में जाके यहाँ पे आपने सपोज यू वांट टू चेक द ट्रायल बैलेंस कोडिंग. सो ट्रायल बैलेंस एडिट. तो ये ट्रायल बैलेंस की कोडिंग है ना. अगर आपको ये कोडिंग आती है तो यू कैन राइट योर ओन, आप खुद ही लिख सकते हो, है ना. और अगर नहीं आती है तो फिर रिकॉर्डिंग के थ्रू लिखो. पर जब इट इज अ वेरी हेल्पफुल इफ यू नो द कोडिंग. इट इज अ वेरी हेल्पफुल इफ यू नो द कोडिंग.
तो somebody's कुछ लोग कोडिंग सीख के भी काम करते हैं पूरा, बिकॉज कोडिंग सीखने से आप काफी सारे काम और आपके इजी हो जाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट. This is the coding. If you want to write your own coding, then again इसी के नीचे आप एक कोडिंग लिख सकते हैं. इसी के नीचे एक कोडिंग लिख सकते हैं ना. जैसे मैं आपको एक लिख के बता देती हूँ कोडिंग. Here, coding always starts with macro. Coding always starts with sub welcome message. Enter. Then MSG box. This is the function of VB, which display you the message welcome. Okay, welcome to the cost audit report. है ना. This is just a simple message. अब मैं इसको यहाँ पे बटन कैसे लगा सकती हूँ? Again, more commands. Then from here, click the macros and then welcome message. Add. And then you can modify the button. For example, I'm taking this face, smiley face. Okay. And okay. Now see when I click here. देखो क्या दे. Welcome to the cost audit report. Okay. So these are the things how you can create your own macro. है ना. VB कोडिंग के थ्रू आप कैसे लिखते हैं. तो both are, I think so कि दोनों चीजें समझ में आ गई हैं. Now I'm moving to the next feature. Now, in a view, there is an option of new window and arrange all and multiple pages, one page. Okay, ये तो क्या है आपका zoom है. अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा परसेंट देखना है 200%, then okay. और otherwise you can scroll from here also. है ना. zoom के बजाय आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं. Next is you want, suppose I have the multiple pages. है ना. Control 9. Okay, मेरे पास इतने सारे पेजेस हैं. Now I want to check the multiple pages simultaneously. So multiple pages. See, आप यहाँ से एक साथ पेजेस भी देख सकते हैं. And then new window. What is a new window? People are like very confusing regarding this new window. Actually new window क्या होती है देखें. जो आपकी ये जो विंडो है ना, ये जो आपका पेज है ना, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, इसी को लेके एक और वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी. एंड देन यू कैन वर्क साइमल्टेनियसली. फॉर एग्जांपल आपको सेकंड पेज पे भी काम करना है, फोर्थ पेज पे भी काम करना है, बट एट ए टाइम यू कैन नॉट वर्क हियर ना. इन अ सिंगल विंडो यू कैन नॉट वर्क एट ए टाइम. एट द सेकंड पेज पे भी काम करना है, फोर्थ पेज पे भी, नॉट पॉसिबल. सो आप क्या करिए, न्यू विंडो में जाइए. न्यू विंडो में जाके आप एक जो आपका यहाँ पर जब आप व्यू में जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, अरेंज ऑल. अरेंज ऑल में आप क्या करिए कि यहाँ पर दोनों को एक साथ देख लीजिए. बाकी मैं क्लोज कर देती हूँ. आई डोंट वांट टू सेव इट, सो है ना, बाकी को क्लोज कर. Okay, अब देख. Now I am having the same document open in a two windows because I use the new window. देखो ये जो है ये भी document 12 है. This is also document 12. This is also document 12-2 and this is document 12-1. ये पहली विंडो है, ये दूसरी विंडो है. अब क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है कि मुझे सेकेंड पेज पे भी काम करना है और फर्स्ट पेज पे भी काम करना है. तो मैं एक ही डॉक्यूमेंट में तो ऐसा कर नहीं सकती हूँ ना. तो मैं क्या करती हूँ, इधर फर्स्ट पेज ओपन कर लेती हूँ. है ना. कैसे ओपन करूंगी, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ.
अब ये मेरा फर्स्ट पेज है, ये मेरा फर्स्ट पेज है, और यहां पर मैं सेकेंड पेज ले लेती हूँ। सेकेंड पेज, ये सेकेंड पेज है, ये फर्स्ट पेज है। अब साइमल्टेनियसली मैं फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज दोनों पे काम कर सकूंगी, बिकॉज आई यूज्ड द न्यू विंडो ऑप्शन। सो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज द फर्स्ट पेज, ओके, और यहाँ पे भी यूज किया मैंने दिस इज द सेकेंड पेज। तो एक साथ मैंने फर्स्ट और सेकेंड पेज पे काम कर लिया। अब इसको बंद कर दिया काम करने के बाद, अब मैं चेक कर सकती हूँ कि फर्स्ट पेज पे मैंने क्या लिखा था, दिस इज द फर्स्ट पेज, और सेकेंड पेज पे क्या लिखा था, दिस इज द सेकेंड पेज। देखो ये लिखा हुआ। सो आई कैन साइमल्टेनियसली वर्क, मैं दोनों में एक साथ काम कर सकती हूँ अगर मैंने न्यू विंडो का ऑप्शन यूज किया। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब क्या होता है ये समझो। इज इट ओके? सो शैल आई मूव अहेड, आगे बढ़े अब इस ऑप्शन से आगे बढ़े। आई एम श्योर कि दिस इज क्लियर। ये बहुत काम आएगा ना, रिपोर्ट बनाते समय बहुत काम आता है। बैलेंस शीट बटन आज ही स्टार्ट करेंगे एक्सेल। बैलेंस शीट बटन कैसे बनाना है? ओके, बैलेंस शीट का बटन बनाने के लिए पहले बैलेंस शीट का मैक्रो बना लीजिए, और फिर आप जो है मोर कमांड में जाके मैक्रो का बटन ऐड करिए। ओके, प्रसाद यू आर, क्यों न्यू विंडो का ऑप्शन इनेबल होता है? सी हियर इज अ न्यू विंडो ऑप्शन। ओके, मे बी की लेट मी चेक, हाँ, कि क्यों नहीं आ रहा है आपके पास। फर्स्ट लेट मी चेक व्हाई इट इज नॉट कमिंग। आना चाहिए, आपके पास क्यों नहीं आ रहा है इसका रीजन आप पहले फाइंड आउट करें, या फिर आप मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाइएगा प्रसाद। ओके, चलिए। सो ऑलमोस्ट वी कंप्लीटेड द वर्ड ऑलमोस्ट ऑप्शंस। देन स्विच विंडो, ये होता है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए, लाइक ऑल टैब, द शॉर्टकट की से ऑल टैब, एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज। हाँ, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। लाइक आपने बनाया है डॉक्यूमेंट, सो यू कैन एडिट द ऑथर नेम। जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है वो अपना यहाँ पे ऑथर नेम आप जो है एडिट कर सकते हो। ऑथर का नाम, एड एन ऑथर। फॉर एग्जाम्पल, you created and your name is Aman J. You created, your name is Aman J. ओके, सो यहाँ पर जाकर आप, पर ये है कि आप जब यहाँ पर बनाते हैं ये है ना, आप यहाँ पे आपके पास नाम आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं, एंड दीज आर द नेम्स विच आर अवेलेबल इन माय लाइसेंस। ये लाइसेंस में जो मेरे पास नाम है वही अवेलेबल है, जो नाम है वो आएंगे। तो मैं यहाँ से जो भी जिसने भी डॉक्यूमेंट बनाया मैं उसका नाम यहाँ से डायरेक्टली दे सकती हूँ। ओके, एंड देन टोटल एडिटिंग डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इज देयर। शो ऑल प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज बहुत काम आती है, यू नो, क्योंकि देखो अगर आपको समझ में आता हो तो एवरी टाइम यू चेक माय, मेरा जो है वर्ड इज अ लाइसेंस। ओके, दिस इज द लाइसेंस एंड इट इज लॉग इन विद कविता नवलानी @so and so। तो मेरे इस लाइसेंस में 4-5 यूजर इंक्लूड है। ओके, एंड आई यूज टू, जब भी मैं इसको सेव करती हूँ तो ये वन ड्राइव में जाके सेव होता है, क्योंकि मैं कौन सा ऑफिस वर्जन यूज कर रही हूँ, MS Office 365, एंड MS Office 365 इज ऑनलाइन। तो ये मेरा ड्राइव में जाके सेव हो जाता है, और somebody suppose wants to check my document, then he can check who is the author।
किसने बनाया ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम लोग 4-5 लोग एक ही साथ काम कर रहे हैं. सो दिस इज द वेरी गुड ऑप्शन, दैट इज द प्रॉपर्टीज. ओके, ये प्रॉपर्टीज ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है. नाउ डेवलपर, आई टोल्ड यू अबाउट द डेवलपर. देन द नेक्स्ट इन द लास्ट ऑप्शन इज कि आप अपने टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं. ना व्हाट इज अ टेम्पलेट? व्हाट इज अ टेम्पलेट? एनीबॉडी नोस? व्हाट इज अ टेम्पलेट? एनीबॉडी नोस? What is a template? What is a template? Anybody knows what is a template? Please answer me. What is a template? Okay. Template is a pre-formatted document. Template is a what? Pre-formatted document. For example, देखो, whenever you create a new document, है ना, मैं सारे close कर रही हूँ, so that confusion should not be there. I should close everything. I should close everything so that the confusion should not be there. Just wait a minute, huh? So that I can close everything. Okay. Now my word is completely closed. अब मेरा वर्ड पूरा क्लोज हो गया. Only one document is running, that is document 14. है ना, ये भी बंद कर दिया. ये लो, ये भी बंद कर दिया. Okay. Now only one word is running. Now the thing is, template क्या होता है? This is the by default. Whenever you go to the file and new, then this open a blank document. Okay, this open a blank document. But you want कि कुछ बना बनाया आपको डॉक्यूमेंट आ जाए जिसमें सिर्फ आपको एडिट करना पड़े. फॉर एग्जाम्पल, इन योर ऑफिसेस लेटर हेड्स आर देयर, ओनली यू नीड टू राइट समथिंग और साइन करके आप दे देते हो. सो you want that kind of document should be there. By default, MS Office gives us the so many template. For example, this, ये उसने हमको बनी बनाई template दे दी है कि भाई आपको कुछ, आपका जो है कुछ इनवॉइस बनाना है तो आप इनवॉइस का फॉर्मेट उसने बना के दे दिया. ओनली यू नीड टू एडिट इट एंड देन यू नीड टू सेव इट, और इसको आपको सेव करना पड़ेगा. जैसे इनवॉइस बन करके मैंने सेव कर दिया. ठीक है, इनवॉइस बन करके मैंने सेव कर दिया, है ना. और कुछ यहाँ पर कुछ एडिट कर देते हैं. ठीक है, यू डेट, देन ये यहाँ पे क्वांटिटी ले ली, डिस्क्रिप्शन ले लिया, यूनिट प्राइस ले लिया, एंड देन line total ले लिया. That is, formula is not there, so you can include the formula, but I am not including the formula. Directly I am going to calculate it. That is a 1200. Then tab key, with 10 monitors, then 2400, and then 24,000. मैंने ऐसे कुछ करके बना लिया, है ना, ऐसा कुछ बना लिया, कंट्रोल एस कर दिया. फिर नया इनवॉइस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, फाइल, देन अगेन न्यू इनवॉइस बना लीजिए. तो आपको फॉर्मेट मिल जाता है, बना बनाया फॉर्मेट है. So that is a ready-made document. Okay, you can say the ready-made document. But now you can create your own ready-made document. Why? Because in your own ready-made document you want एक ट्रायल बैलेंस होना चाहिए, P&L का फॉर्मेट होना चाहिए और बैलेंस शीट होनी चाहिए, बना बनाया आना चाहिए. So first you have to create
पहले तो आपको बनाना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेडर डाल देते हैं। ओके, यू शुड, यहाँ पे आप हेडर डाल दो। हेडर डाल दिया, सीए में रिपोर्ट, है ना। और उसके बाद यहाँ पे जाओ तो आप क्या कर सकते हो, डेट्स डाल सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट में जाते हो ना तो डेट का भी ऑप्शन आ जाता है। ये रहा, ये आपने डेट डाल दी, अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर आपका पैरा लिखा हुआ आ जाए, फर्स्ट पैरा। फिर एंटर करो तो आपके पास ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ जाए। तो यहाँ से आपने ट्रायल बैलेंस भी ले लिया, और चूंकि P&L तो है नहीं, मैंने बनाया नहीं, तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट डाल देती। ठीक है, यहाँ से जाएंगे व्यू मैक्रो, व्यू मैक्रो, और बैलेंस शीट डाल दी, रन कर दिया, आ गया। और उसके बाद नीचे में अपना सिग्नेचर डाल दी। इन दो, राइट। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट का रेडी कर लिया, और मैं चाहती हूँ कि ये मेरा टेम्पलेट बना हुआ आ जाए। और इसको हम थोड़ा सा और डेकोरेट कर देते हैं। लाइक आप इसमें जो है डिजाइन टैब नहीं है, तो इसका जो है हम डिजाइन टैब भी ले लेते हैं। कस्टमाइज रिबन, पेज लेआउट और डिस्प्ले बैकग्राउंड। देन थोड़ा सा कुछ और देखते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। वाटरमार्क डाल देते हैं, चलिए कस्टम वाटरमार्क, एंड देन एक पिक्चर डाल देते हैं ना, CMA लोगो डाल देते हैं। हाँ, मेरे पास डाउनलोड्स में लोगो डला हुआ है, बस, है ना। ये लास्ट ऑप्शन है आपका, ये मैंने CMA का लोगो डाल दिया। ओके, अब मैं इसको सेव कैसे करूंगी? यू कैन नॉट सेव इट नॉर्मली। आप इसको जब सेव करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा वर्ड टेम्पलेट का। इसको वर्ड टेम्पलेट में सेव करिए, वर्ड टेम्पलेट। वर्ड टेम्पलेट, और कहाँ सेव करना है ये आपकी मर्जी है। ये आपकी मर्जी है कि आपको इसको कहाँ सेव करना है। तो वर्ड में यहाँ पे वर्ड के टेम्पलेट्स होते हैं ना, वर्ड के टेम्पलेट्स बाय डिफॉल्ट रहते ही हैं। वर्ड, इसमें वर्ड में हमने ऑडिट रिपोर्ट करके हमने एक टेम्पलेट सेव किया, क्योंकि उसकी परमिशन नहीं है। यहाँ पे सेव, ठीक है। अब जब भी आप फाइल करके न्यू करेंगे ना, तो आपको क्या है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपका अपना फॉर्मेट चाहिए, आपका अपना फॉर्मेट चाहिए। तो आप यहाँ से, जैसे मेरा पहले से सेव है, ये इस तरह का फॉर्मेट चाहिए आप। तो दिस इज द टेम्पलेट, टेम्पलेट एक्सटेंशन इज .dotx। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर वर्ड। वर्ड आपका कंप्लीट हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे ये, जो दैट वाज आई taught you yesterday and today, macros and templates. These are the very important option. Okay, so now we are going to start our MS Excel. Already prepared format. Yes, Chandrasekhar. Macros once again. Because time doesn't permit me कि macros, सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ macros is what. Tanisha, your question is, can you please explain the macros again? Macro is just like a recording and replaying it again and again. आप एक बार रिकॉर्ड करके, once you record then you can replay it again and again. आप उसको replay कर सकते हैं,
जब आप उसको रिप्ले करते हैं तो जो भी आपने एक्शन रिकॉर्ड करी है उसका एक क्या होता है, वीबी कोडिंग लिखा जाता है, एंड कोडिंग इज रिटन बाय द वर्ड इटसेल्फ, ऑटोमेटिकली वो लिख लेता है. एंड मैक्रो कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द शॉर्टकट कीज, और बटन और बोथ दोनों से बना सकते हैं. ओके, ट्राई टू do yourself, otherwise I'll give you the more explanation, okay, because it is already included in the Excel. So today we are going to start the next tool of MS Office, that is very important tool, that is MS Excel. And as I already told you, Word is a document writing software, so Excel is a Indian electronic spreadsheet software. It is an electronic spreadsheet software. अब ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या करता है, वर्ड क्या करता है, इसको समझना पड़ता है. इन अ वर्ड we can write down the document, we can create the documents, we can create the reports also, but we cannot do the lots of calculation. अभी जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट की कैलकुलेशन करके बताई थी, टोटल निकालना था, so there are the options of the so many formulas are there, but limited formulas. You cannot use more than like a large formulas आप नहीं use कर सकते. It is not possible in the Word. But you have a large amount of data for the calculation, then think about the Excel. You cannot use Word. तो आपको फिर क्या यूज करना पड़ता है, Excel यूज करना पड़ता है, because it will take time. अगर आप इतनी calculation Word में करेंगे तो it will take lots of time and sometimes not possible to do the large amount of calculations in a Word. So if you want to do the large amount of calculation, then think about the Excel. और चूंकि हम लोग जो है सीए में जो है उसके वो सारा दिन हम लोगों के पास फिगर्स ही रहते हैं जिससे हमें काम करना पड़ता है. सो फिगर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस. फिगर्स के साथ काम करना पड़ता है. एंड एक बार शायद आपको अगर मालूम हो तो कि कुछ ऐसी थ्योरी भी दी गई थी कि हम उतने फिगर्स के साथ काम करते हैं जितने फिगर्स हमने कभी देखे भी नहीं है, राइट. लाइक करोड़ों में, अरबों में, लाखों में हम काम करते हैं, बट समटाइम्स हम जीरो तो लगा देते हैं पर उतने जीरो हमने लगे हुए हम उतने अमाउंट हमने देखा नहीं है कभी. एंड दैट्स ट्रू बिकॉज सी वी आर वर्किंग विद द लार्ज कंपनीज. बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो आपका जो है जियो हो, है ना, रिलायंस का ही जो सेगमेंट है जियो हो, या आपकी जो है दूसरी कोई कंपनीज हो, इन सब में सीए में काम कर रहे हैं. सारी कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज, हिंदुस्तान मोटर हो गया, आइशर हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, रोजी ब्लू हो गया, डायमंड्स की जो कंपनीज हैं सभी में सीए में काम कर रहे हैं, राइट. मारुति हो गया, मारुति के जो रुकमनी मोटर्स हैं, नेक्सास हैं, इनमें अलग अलग सीए में काम कर रहे हैं. तो दे आर वर्किंग एंड दे आर वर्किंग विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. वो लोग बहुत बड़े बड़े डेटा के साथ काम करते हैं. तो दैट्स ट्रू कि इतने फिगर्स तो हम कभी देखते नहीं, बट हम काम करते हैं उतने फिगर्स के साथ. सो दैट्स ट्रू. तो फॉर दैट वी कैन नॉट वर्क विद द वर्ड. हम वर्ड में इतना काम नहीं कर सकते. फॉर दैट वी नीड अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर विच इज built for the calculation purpose, arithmetic and logical calculation. So Excel is a software which is especially built for the calculation purpose, arithmetic and logical calculation. And the difference between the Word and Excel is majorly, when you open a Word, then it creates a document, and when you open a Excel, then it creates a book. Now the difference between the book and document is, document is a collection of pages, as you already seen. In a document you can insert the more than one pages, and but in a book you can insert the more than sheets. तो पेज और शीट क्यों बोल रहे हैं हम? बिकॉज शीट लुक्स लाइक अ टेबल, ग्रिड होती है, वो लुक्स लाइक अ टेबल, एक्चुअली टेबल नहीं होती है, राइट. इट लुक्स लाइक अ टेबल और ग्रिड. जैसे अभी हमने ऑलरेडी देखा कि इफ वी वांट टू इंसर्ट सम फॉर्मूला देन वी नीड अ टेबल. टेबल के बाहर कभी फॉर्मूला नहीं डलता है, ये ध्यान रखना. तो वी नीड अ टेबल, टेबल के बाहर कभी फॉर्मूला नहीं डलता है. सो सेम थिंग एक्सेल में तो है ही पूरी टेबल. It looks like a completely table, so that's why it is known as a sheet. It is divided into rows and column. ये तो है ही पूरी शीट्स. तो इसमें तो आप शीट तो पूरा है ही टेबल जैसा दिखता है, तो इसमें तो आप पूरे फॉर्मूले डाल सकते हो.
बट वर्ड में आपने फॉर्मूले थोड़ी डाले थे, वर्ड में तो आपने लिमिटेशन था, एक टेबल लेके फिर फॉर्मूला डाला था, एक या दो फॉर्मूला, इससे ज्यादा तो आप यूज, फिर वो राइट क्लिक अपडेट फील्ड का ऑप्शन था, मैंने आपको बताया था. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द वर्ड एंड एक्सेल. Word extension is .docx, but while Excel extension is .xlsx. Excel का extension क्या होता है? .xlsx. Later on, I'll tell you about the X. What is X? Like, but I already taught you at the time of starting the session कि X क्या होता है, तभी मैंने बताया था, but later on I'll tell you also. So extension, Excel extension is .xlsx. Okay. Now, Excel जब आप स्टार्ट करते हैं ना, so the shortcut key to start the Excel is just press window R key. After pressing the window R key, run command is there as you seen on your screen. Run command is there. In the short, type here the Excel, EXEL. Type here the Excel and press enter. It will open a Excel. And you can check here the version of my Excel, that is Microsoft 365. Microsoft 365. And I told you about the versions. Version क्या होते हैं? Please write down your answer. Okay. So version means what? Version means what? As the features, latest feature introduced, then the version is again introduced. Like the first version was 97, then 2000, then 2003, 2007, and so on. Now I'm using the Excel 365, Microsoft Office 365. The major difference between the Microsoft 365 and the previous version is हमको 4 बजे नहीं, आज तो मैं तुम जानती हूँ. बस सॉरी आपको भी जाना है, आपकी बहू को भी जाना है. So the major difference between the Office 365 and the previous version is MS Office 365 is a SaaS services. Is a what? SaaS services. SaaS is what? Software as a service. Actually, you know, kind of services are three: PaaS, IaaS, PaaS, SaaS. IaaS is the infrastructure as a service. PaaS is a platform as a service, and SaaS is a software as a service. Definitely in the coming sessions, I'll give you the explanation about the IaaS, PaaS, SaaS. And in the SaaS services, there is no need to log in with the, no need to install the softwares also. Like मुझे Excel install करने की भी जरूरत नहीं है. Excel install करने की भी जरूरत नहीं है. I can directly use the Excel online. अगर अभी आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लैपटॉप पे Excel install नहीं है, so you can directly log in, go to the Microsoft website and directly you can use the Excel. Is there anybody who doesn't have the Excel installed in the system? ऐसा कोई बच्चा है क्या जिसके पास सिस्टम पे Excel installed नहीं है? Is there any student who don't have the Excel installed in the system? Any student, please?
नो, ओके, ठीक है, ऑलरेडी हैव, नो मैम, ठीक है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके पास एक्सेल इंस्टॉल नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ, यू कैन डायरेक्टली वर्क ऑन द नेट विदाउट हैविंग द एक्सेल। हाउ यू कैन डायरेक्टली वर्क ऑन द नेट? Go to the Microsoft website, है ना, go to the Microsoft website, okay, and then microsoftwebsite.com, then use the sign in option, चलिए आए, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, सो दैट्स व्हाई। I should log in with my Microsoft account. यहाँ पे आपको सारी एप्स मिल जाती हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो दिस इज द SaaS सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। दिस इज द SaaS सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने ये आपको SaaS सर्विसेज प्रोवाइड करी है। इसके लिए आपको एक्सेल को इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं रहती, यू कैन डायरेक्टली यूज द एप्स। नाउ व्हेनेवर वी ओपन अ एक्सेल, then this is the interface, excel का ये इंटरफेस है। सेम थिंग जैसे अभी आपने रिसेंटली यू लर्न वर्ड हैव द सो मेनी टेम्पलेट्स, बिल्ट इन टेम्पलेट्स, यहाँ पे भी बिल्ट इन टेम्पलेट्स है, बट वी आर नॉट मूविंग टू द टेम्पलेट, वी विल क्रिएट अवर ओन शीट। सो when you open a excel, when you create a new excel, then by default it gives you the name book 1. this is known as a title bar, और ये इसका एक क्विक एक्सेस टूल बार है। जैसे अभी आपको मैंने वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार पढ़ाया था, यहाँ पर भी है। इसको मैं नीचे ले आती हूँ, शो बिलो द रिबन, दिस इज योर क्विक एक्सेस टूल बार, एंड दिस इज योर टैब्स, दीज आर योर टैब्स। This is your ribbon, home tab, insert tab, page layout tab, formula tab, data tab, review tab, view tab and developer tab, जो अभी हमने पढ़ा था वो टैब यहाँ पर भी है। Now we are going to start from the home tab, and this is the sheet, जो हम वर्ड में जिसको पेज बोलते थे, यहाँ पे ये शीट है। शीट looks like a grid, and definitely जैसे एक पेज का साइज होता है, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन एंड टेक्स्ट एरिया होता है, यहाँ पे आपको कोई टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन नहीं मिलेगा, बट इसका जो टेक्स्ट, इसका जो एरिया है वो कितना बड़ा है आप देखें तो कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करेंगे तो इतना बड़ा एरिया है इसका, है ना, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ टेबल, एंड टेबल इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स। हाउ मेनी रोज आर देयर, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, सो दैट जस्ट राइट डाउन, इसको लिख भी लीजिएगा कि कितनी रोज होती है एक्सेल में। How many rows are there? 10,48,000 48,576 rows. And columns कितने होते हैं? Columns 16,384 columns. If you want to check कि जो मैम बोल रही है वो सही है कि नहीं, तो आप क्या करिए, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करिए, देखिए हाउ मेनी रोज आर देयर, 10,48,576, एंड कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करिए, सो यू विल गेट द लास्ट सेल, कॉलम नेम इज XFD, क्योंकि कॉलम को हमेशा नाम दिया जाता है, लेटर दिया जाता है, वी कैन नॉट असाइन द नंबर टू द कॉलम। तो कॉलम को जो नंबर दिया जाता है, नेम दिया जाता है, these are the column letters,
In column, letters are 26, 26 letters होते हैं. After completing the 26 letter A, B, इस तरह से जो है आपके columns को letters दिए हुए. So last column letter is XFD. The last cell name is XFD 10,48,576. जिस सेल पे आप कर्सर रखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर्सर यहां रखा, सो यू कैन चेक द सेल नेम इन द नेम बॉक्स. दिस इज नोन एज अ नेम बॉक्स. यू कैन चेक द सेल नेम इन द नेम बॉक्स. नाम नेम आपको यहां दिख जाएगा. दिस इज नोन एज अ नेम बॉक्स. इन वॉट एवर द कॉन्टेंट्स आर देयर इन द सेल, यू कैन चेक इन द फॉर्मूला बार. जो भी सेल में लिखा हुआ है अंदर, वो आपको कहां दिखेगा? फॉर्मूला बार में दिखेगा. इफ यू वॉन्ट टू एडिट इट, आपको इसको एडिट करना है, डिलीट नहीं करना है, एडिट करना है. सो प्रेस F2. F2 इज अ शॉर्टकट की टू एडिट मोड. एडिट मोड के लिए शॉर्टकट की होती है F2. F2 फॉर एग्जाम्पल आपको किसी फोल्डर को रीनेम करना है ना, तो आप क्या करो? F2. देखो F2 करके कर्सर वहां आ गया. सो F2 इज अ शॉर्टकट की फॉर द एडिट मोड. इज इट क्लियर? Yes, yes, Deba Jyoti, 2021 sufficient है. मैम इफ अपग्रेड ऑफ विंडोज 11 विल देयर बी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिपाशा. ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने से क्या प्रॉब्लम है? MS ऑफिस तो है ना आपके पास. वी आर लर्निंग द MS ऑफिस. कोई दिक्कत नहीं. ओके, सो हाउ मेनी रोज आर देयर? 10,48,576 रोज. और कॉलम कितने होते हैं? 16,384 कॉलम्स आते हैं. 16,384 कॉलम्स आते हैं. The last column name is 10 lakh XFD 10,48,576. This is the last cell name. So क्या बोलते हैं? Cell. And what is a cell? Where the row and column intersect each other, that area is known as a cell. Where the row and column intersect each other, that area is known as a cell. Is it clear? Okay. Okay. Now, अब इसमें एक्सेल में काम करने से का तरीका क्या होता है? आपको जब भी किसी सेल में डेटा डालना हो, सो प्रेस F2 एंड जस्ट देखो. अब एक चीज का ध्यान रखना. ओके, दिस इज माय रिबन. ऑल द ऑप्शंस आर हाइलाइटेड. सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको. फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेंसिटिव, एडिशन, व्हाटएवर, ये तो मेरे एडवांस ऑप्शंस हैं. बट द मोमेंट आई प्रेस F2, सारे डी हाईलाइट हो गए, है ना. यू कैन नॉट सिलेक्ट. अभी आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हो. कोई भी ऑप्शन आप यहां से ले नहीं सकते हो, बिकॉज यू आर इन एडिटिंग मोड. यू आर इन एडिटिंग मोड. जस्ट टाइप हियर समथिंग. जैसे मैंने यहाँ लिख दिया CA में. प्रेस एंटर. देन द मोमेंट यू प्रेस एंटर, देन इट विल गेट हाईलाइट. अब यहाँ पे कर्सर से अब ले लो आप ऊपर. और ये जो मूव कर रही हूं मैं ना कर्सर को, ये कर रही हूं मैं आपके कर्सर कीज से. किससे कर रही हूँ? कर्सर कीज से. 4 cursor keys are there: left, right, above, and below. Now you can move. Then you can press enter. You can press tab key also. Tab key, enter, and cursor key. These are the 3 keys to move the pointer. Now, where the pointer presently is highlighted, आपका pointer कहाँ पे है? आप बताइए. आपका pointer जहां पे है, that cell is known as active cell. In the active cell name is F1. Where your pointer is blinking, अभी आपका जो pointer है जहां पे, that is cell is known as active cell. An active cell name is shown on the name box. देखो यहाँ पे name box में दिख रहा है F1. Okay. Now, and somebody says कि जहां डार्क एरिया होता है ना, उसको एक्टिव सेल बोलते हैं. ऐसा भी बोल सकते हो आपकी जो डार्कन एरिया है, दैट इज नोन एज एक्टिव सेल. यू कैन नॉट से दिस इज द एक्टिव सेल. द एक्टिव सेल इज F1. यू कैन नॉट से I1 इज एक्टिव सेल. नाउ सपोज यू वांट टू वर्क विथ सम सेल्स. आपको इन सेल्स के साथ काम करना है. ओके, सो यू कैन सेट द बॉर्डर. आई विल नॉट explain you the font or like whatever, because these are very simple options.
You can select all borders. You can select all borders. अब आपको यहाँ काम करना है तो आपने क्या किया, इस एरिया को हाईलाइट कर दिया और इसको आपने बॉर्डर सेट कर दी. Now just type here the serial number, then name, then address, then salary and commission. Right? अब आपको आपका ये जो सेल है, the content width does not fit with the cell. आपने जो कंटेंट आपने लिखा है ना वो सेल में आ नहीं रहा है. So you should double click it to increase the column width. You should double click to the increase the column width and you can reduce the column width. क्योंकि देखो नेम जो है वो यहाँ तक ही आ रहा है तो नेम का जो कॉलम है वो छोटा होना चाहिए. So just double click तो automatically it adjusts according to the contents. Like double click, it automatically adjusts according to the content. Double click, it automatically. This is known as separator. इनको separator भी बोलते हैं. ये जो arrow आ रहा है ना, this is known as a separator. Okay. Now the next is, आपने यहाँ one type किया. The moment you type here one, everything is get de-highlighted. Press enter. Then again select it and use drag and drop feature. This is the very important feature. अगर ये नहीं आता Excel में तो कुछ नहीं आता. अगर Excel में drag and drop नहीं आता तो कुछ नहीं आता. So how you can use the drag and drop? The plus sign formed by the cursor right corner of the cell. Plus sign formed by the cursor right corner of the cell. Cell के right corner में जब आप cursor रखते हैं तो plus sign formed, plus sign बन जाता है. Just इसको drag करिए ना, पकड़ के खींचना सबको आता होगा. इसको बोलते हैं drag करना. When you drag it, it copy the cell. But from here in the mini toolbar, you can take fill series. देखो उसने क्या कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so. Is it drag and drop? This feature is known as drag and drop. Once again, I am going to tell you. Just type here 100, enter. Then go to the cursor, same Excel, and then drag it. Now you can use the mini toolbar that is known as mini toolbar in fill series. Is the drag and drop feature clear? Drag and drop feature आता है सबको? विपाशा F2 इसलिए आपका काम नहीं कर रहा होगा. आई एम श्योर यू आर यूजिंग द लैपटॉप और लैपटॉप में जितनी भी फंक्शन कीज हैं इट ऑलवेज वर्क विद द फंक्शन नीचे दिया हुआ है ना, FN की जो दी हुई है ना उसको उसके साथ में प्रेस करिएगा. विपाशा जस्ट ट्राइड इट. Because see, I know the basic things are already done. आपने पहले इसको किया होगा बट ठीक है. आई एम लाइक थोड़ा सा मैं प्रीव्यू उसका जो है रिव्यू दे रही. विपाशा इट इज वर्किंग. ओके. नाउ सी, नाउ द नेक्स्ट इज, अब इसका यूज इसका कहाँ यूज कर सकते. देखिए, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट शीट. अब मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ, ठीक है, एंटर. और 1 लिख के मैं इसको ऐसे ड्रैग कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल ड्रैग करिए. एंड फ्रॉम हियर यू कैन टेक द फिल सीरीज. देन यहाँ 2 लिखती हूँ और यहाँ 4 लिखती हूँ, ठीक है. अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके खींचती हूँ. देखिए, इन आई सिलेक्ट कंप्लीट सेल्स एंड आई ड्रैग इट. सारे टेबल्स आ गए. देखिए, is it clear?
I'm sure like in a drag and drop nobody have some problem. ड्रैग एंड ड्रॉप में किसी को दिक्कत नहीं है. टेबल कैसे आया सारिका? ओके सी, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप 1 लिख के एंटर करते हैं फिर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं, है ना. एआई समझते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट देख के उसको सेम जगह कॉपी कर देता है. बट हियर देयर इज ऑप्शन ऑफ फिल सीरीज. इसने सीरीज डाल दी. अब मैंने इसको ऐसे खींच लिया हॉरिजॉन्टल और इसको मैंने सीरीज डाल दी. अब क्या हुआ, अब फिर से ध्यान देना, अब मैंने यहाँ 4 लिखा. ओके, एंड आई सिलेक्टेड बोथ, दोनों को सिलेक्ट किया मैंने और अब खींचा तो एआई क्या करता है, समझ जाता है कि उसका ट्रेंड क्या है. 2 के बाद 4 आता है तो 6 आएगा, फिर 8 आएगा, है ना. ये एआई अपने आप समझ जाता है. अब मैंने क्या किया, इन चारों को सिलेक्ट करके ऐसे खींचा तो ऑटोमेटिकली एआई क्या करेगा, देख लेगा ना कि भाई यहाँ पे 3 है तो नीचे 6 आएगा, 4 है तो 8 आएगा, 5 है तो 10 आएगा. सेम चीज इज हियर. अब इन दोनों को सिलेक्ट करके भी मैं नीचे तक डाल सकती हूँ और मैं चाहूं तो क्या कर सकती हूँ, इसको पूरे को सिलेक्ट करा, यहां तक गई और फिर इसको सिलेक्ट करके यहां तक गई. देखो सारे टेबल्स आ गए. ऐसा करके देखना आप लोग. यू शुड डू इट योरसेल्फ. हाँ, खुद से करके देखना, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक्सेल में ये नहीं आया तो यू कैन नॉट लर्न द एक्सेल. ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं आता तो फिर एक्सेल में कुछ नहीं कर सकते. तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न द ड्रैग एंड ड्रॉप. पहले आपको ड्रैग एंड ड्रॉप सीखना पड़ता है. Is it completed? Make sure everybody completed. आ गया सारिका? सारिका, tell me, unless until everybody should not like learn the basic feature drag and drop, then I cannot move on. मैं start कैसे करूं? पहले आपको drag and drop तो आना चाहिए ना. Okay, okay, thank you so much. Everybody is written कि मैम आ गया. Okay, thank you सारिका. Okay. So next is, अब ये टेबल के साथ साथ इसका एडवांटेज देखिए. सपोज यू वांट टू इंसर्ट द मंथ्स. आपको यहाँ पे मंथ इंसर्ट करने हैं ना, मंथ्स, एंड यू इंसर्ट जनवरी. स्पेलिंग का ध्यान रखें. एंड देन ड्रैग इट. सी, अपने आप महीने आ गए कि नहीं आ गए. even you insert the months in this format, Jan 24, and then you drag it. See, अब जैसे ही जैन दिसंबर तक खत्म होगा, अपने आप जनवरी 25 आ गया ना. एंड इफ यू वांट कि नहीं, जैन 24 नहीं होना चाहिए, 24 जनवरी आपको लिखना है, तो 24 जैन. तो फिर आप इसको ऐसे ड्रैग कर ले. अब आपको 24 जनवरी का फॉर्मेट चेंज करना है इसका, है ना.
ये इसका फॉर्मेट चेंज करना है। 24 जनवरी के आगे आपको DDMMYY पूरा चाहिए। सो प्रेस Ctrl+1 फॉर फॉर्मेट, प्रेस Ctrl+1 एंड देन सिलेक्ट फ्रॉम हियर फॉर्मेट। अब आ गया, अब इसको ड्रैग कर लीजिए, देखिए इज इट Ctrl+1 इज अ शॉर्टकट की फॉर द फॉर्मेट। अब आपको इसने क्या किया, डेट्स बढ़ा दी आगे, बट यू डोंट वांट डेट्स ना, यू वांट मंथ, तो फिर इसको ओपन कर लीजिए, यहां से इसको मंथ्स ले लीजिए। इज इट क्लियर? अगेन मैं बता देती हूँ, 24 Jan, नाउ आई ड्रैग इट। नाउ मुझे ये DDMMYY चाहिए, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेस Ctrl+1 टू चेंज द फॉर्मेट DDMMYY। बट द मोमेंट आई सिलेक्ट द DDMMYY उसने डेट्स बढ़ा दी, पर मुझे डेट्स नहीं चाहिए, मुझे तो मंथ फिल करने थे। तो फिर आप क्या करेंगे, जब आप ड्रैग करते हैं, सो यू विल गेट द मिनी टूल बार, ये आ गया। एंड फ्रॉम हियर यू शुड सिलेक्ट फिल मंथ्स। देखो, फिल ईयर्स, फिल मंथ्स, फिल डेट्स, एवरीथिंग इज देयर। Is it? Anything else you want? Very good, very good. Very good. Okay, so next is, अब देखिए, अब जब आप इसमें संडे डालते हैं, संडे, and you drag it, then Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, and again Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Okay, so drag and drop feature is a very important in our Excel. Excel में सबसे important है drag and drop. अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता. I am again and again saying you कि ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, right? है ना, drag and drop हुआ. Now format related option. Sometimes you know, अब आपने यहाँ डेट डाल दी है ना, द मोमेंट यू इंसर्ट द डेट, ऊपर देखिए नंबर फॉर्मेट जहां दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली इट गेट कन्वर्टेड इनटू द डेट फॉर्मेट। पर यहां जाएंगे तो ये अभी क्या है, जनरल है, बट यहां जाएंगे तो क्या हो गया, डेट हो गया। बट नाउ आई डोंट वांट डेट, मुझे यहाँ डेट चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए था, नंबर चाहिए था, बट ऑटोमेटिकली इट गेट कन्वर्टेड इनटू द डेट, क्योंकि पहले डेट था ना, उसने उसका डेट का फॉर्मेट सेट कर लिया था। सो फ्रॉम हियर यू हैव टू सिलेक्ट द जनरल फॉर्मेट। नाउ यू कैन ड्रैग इट। क्या ये समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, जो बच्चे एक्सेल बहुत अच्छे से जानते हैं, भले आगे का काम जानते हैं, बट अगर उनको बेसिक्स नहीं आता तो फिर वो अटक जाते कि क्यों ये डेट वापस से दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई डिलीटेड हियर और यहाँ मैंने डाल दिया 100, अपने आप डेट आ गई। तो ये डेट क्यों आई, बिकॉज फ्रॉम हियर यू शुड सेट द जनरल फॉर्मेट, so that's why it get converted into the date. अपने आप डेट में कन्वर्ट हो जाता है अगर आपका पहले डेट डला हुआ था तो। ओके, सेम थिंग इज हियर। सपोज यू इंसर्ट हियर द 10% एंड यू ड्रैग इट, ठीक है, और आपने यहां से फिल सीरीज कर लिया। नाउ द मोमेंट यू वांट, नहीं, मुझे यहाँ पे 10 ये नहीं चाहिए थे, परसेंट नहीं चाहिए थे, तो आपने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। अगेन आपने यहाँ पे डाल दिया 1, तो अपने आप वो परसेंट हो गया ना, देखो 2 डाल दिया, जैसे मैं परसेंट नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ 2 लिख रही हूँ, तो भी परसेंटेज हो। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, यू शुड सिलेक्ट फ्रॉम हियर जनरल। इज इट क्लियर? फॉर्मेट इज क्लियर और नॉट? फॉर्मेट इज क्लियर। नाउ सपोज यू वांट टू इंसर्ट हियर द 2%, देन डोंट इंसर्ट 2%, मत लिखो, सिर्फ क्या लिख दो, 0.02 and select it and set the percent format. अब देखो वो परसेंट फॉर्मेट पे सेट हो गया कि नहीं, है ना। जैसे यहां मैंने लिखा 0.1, अब मैंने इसको परसेंट फॉर्मेट पे ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप 10% हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू
प्रेस द परसेंट साइन लिखने की जरूरत नहीं रहती है. गेटिंग? इतना समझ आया? दीपांकर, आई विल टेल यू विदा माउस के कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, मैं बताऊंगी आपको. उसके अपने लिमिटेशंस हैं. इज इट क्लियर? फॉर्मेट इज क्लियर? फॉर्मेट समझ आया? फॉर्मेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्मेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सेल. Is it clear? Should I move for the next? Okay. Now, in Excel, okay, this is the drag and drop feature of the Excel. You can insert the more than sheets. No limitation is there. अब by default इसमें कितनी sheets होती है? फाइल, न्यू, देन मेरी 1 ही है, बट आई एम श्योर आपकी 3 आ रही होगी. In a book by default 3 sheets are there. By default कितनी sheets होती है? 3 होती है. अब मुझे एक और चाहिए, तो कंट्रोल just a minute. Shift F11 is a shortcut key to insert the sheets. Shift F11. Shift F11 is a shortcut key to insert the sheet. And please keep the notebook and the pen besides you because shortcut keys बहुत काम आती है Excel में. भले Word में आपने नहीं note down की हो, but Excel में you should note down. Because in Excel, shortcut keys are very important. Okay. Shortcut keys. Shift F11. Shift F11 is a shortcut key to insert the sheet. And then Control minus is a shortcut key to delete the cell or row or column, not sheet. Active sheet ऐसे delete नहीं होती. Control minus is a shortcut key to delete the cell, row or column. So I'm going to start the working. I just selected some cells. है ना, और मैंने इसको Alt H BA is a shortcut key to set all the borders. मैंने इसके borders set कर दिए. Then months and employee code, salary, then HRA, DA. है ना, यहाँ हम क्या करते हैं अभी, इसका एक और दूसरा बना लेते हैं. प्रोडक्ट, परचेज, देन सेल्स, देन स्टॉक. मंथ्स ले लेते हैं जनवरी 24, 25 and just use the drag and drop feature. Okay, now product is these are some products.
Okay. Now the purchase of RAM is 200 and the sale of RAM is 120. Okay. And the hard disk is 100, 220. So I can use drag and drop. मैंने इसको select किया because this is just an example. तो मैं इसे डाल सकती हूँ ना to fill the figures. Sales 120 के बाद 140, 125 दे देती हूँ. Then select both the cells and खींच लो तो देखो 5-5 से इंक्रीमेंट कर लेता है ना. इतना तो करवा दिया आपको मैंने. अब नेक्स्ट आई एम गोइंग टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल रेफरेंस. अब मैं जो आपको समझा रही हूँ उसको ध्यान से समझ लेना. दैट इज सेल रेफरेंस. सेल रेफरेंस इज व्हाट इज अ सेल रेफरेंस? सेल रेफरेंस इज व्हाट? whenever you want to link one cell to another, then it is known as cell reference. एक सेल को दूसरे सेल से जब लिंक करना हो तो इसको क्या बोलते हैं? सेल रेफरेंस. Whenever you want to link one cell to another, then it is known as cell reference. Anybody? किसी को कोई डाउट? एक सेल को दूसरे सेल से जब लिंक करते हैं, शॉर्टकट की किसकी चाहिए? Control-1 फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की है. Control-1 is a shortcut key for the format cell. मुक्ति कौन सी शॉर्टकट की बोल रही हो बेटा? मुक्ति, which shortcut key you want? Shift F11 is a shortcut key to insert a new sheet. Shift F11. Control-1 is a shortcut key to open the format cell window. Then Control- is a shortcut key to delete the cell or row or column. Then same thing is Control+. वर्क करते करते बताऊंगी मैं आपको. ठीक है. डिलीट की शॉर्टकट की है Control-. वर्क करते करते शॉर्टकट कीज पढ़ाऊंगी. Okay. So again we are going to start. Cell reference. Cell reference means what? Whenever you want to link one cell to another, then it is known as cell reference. And cell reference always be starts with equal to sign. Equal to then cell का नाम. Equal to then cell का नाम. तो ही आप cell reference ले सकते हो. What is cell reference? Whenever you want to link one cell to another, then it is known as cell reference. इसको dependency भी कहते हैं हम लोग. Whenever you want to depend the one cell to another, then it is known as cell reference. Okay, for example, ये जो purchases है ना, इस cell का नाम क्या है? D3 and this is G3. I want G3 should be depend on the D3, then it is known as cell reference. I want G3 should be depend upon the D3. Whatever in the D3, वो G3 में भी आ जाना चाहिए. So G3 should be depend on the D3. So this is known as a cell reference. I have to take the cell reference. Cell reference always start with the equal to sign and cell name. Equal to cell का नाम क्या है? D3. Enter. Okay. Or you can say equal to और arrow की से यहाँ चले जाइए. Enter. ऑटोमेटिकली अब F2 करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि
Now G3 is depend upon the D3. This is known as cell reference. Is it clear? Is it clear? Is it? Okay, now G3 is depend upon the D3. अब हमने एक्सेल में ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर सीखा, तो जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, देन इट ऑटोमेटिकली डिपेंड अपॉन द D4. देखो, है ना, जैसे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देन ऑटोमेटिकली इट टेक्स द रिलेटिव रेफरेंस. इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस. व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम अबव, देन इट टेक्स द रिलेटिव रेफरेंस एंड इट इंक्रीज द रो नंबर. जैसे आपने क्या किया, जब खींचा तो इसने क्या किया, ऊपर से फॉर्मूला कॉपी कर लिया, बट इट इंक्रीज द रो नंबर. इसने क्या बढ़ा दी, रो नंबर इंक्रीज कर दी. व्हेन यू ड्रैग इन द हॉरिजॉन्टल वे, आप यहां से करते हो तो ये कॉलम लेटर बढ़ा लेता है. देखो आप, नाउ इट इज E3. नाउ H3 इज डिपेंड अपॉन द E3. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Anybody have some doubt? रेफरेंसिंग बहुत बेसिक चीजें हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, है ना, व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम द अबव, अल्टीमेटली ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करता है, कॉपी करता है. वी ऑलरेडी सीन. व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम अबव, देन इट ऑटोमेटिकली इंक्रीज द रो नंबर. दिस इज नोन एज रिलेटिव रेफरेंस. ये अपने आप क्या करता है, रिलेटिवली उसको इंक्रीज कर लेता है. ऊपर D3 है तो इसको D4 कर देगा, राइट? ऑटोमेटिकली इट इंक्रीज द रो नंबर. व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम द लेफ्ट साइड, देन इट ऑटोमेटिकली इंक्रीज द कॉलम लेटर. सी, यहाँ D3 था तो यहाँ क्या हो गया, E3 हो गया. सो D के बाद क्या आता है, E. इट ऑटोमेटिकली इंक्रीज द कॉलम लेटर. ओके, दिस इज नोन एज रिलेटिव रेफरेंस. याद रखना मैं कितने रेफरेंस पढ़ा रही हूँ आप. रिलेटिव रेफरेंस. ओके, अब इसका यूज कैसे कर सकते हो आप, सेल रेफरेंस का यूज कैसे कर सकते हो? टू कैलकुलेट द स्टॉक इज इक्वल टू, बिकॉज ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स can be, all the operands and operators can be used to create the formulas. फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स, ऑल काइंड ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स. अब स्टॉक का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, परचेज माइनस सेल्स. सो इज इक्वल टू दिस माइनस दिस. ऑपरेटर यूज कर लीजिए माइनस का, एंड यू शुड ड्रैग इट. आप देखो, आप इसको आप क्या करिए, ड्रैग कर लो, तो देखो अपने आप क्या हो गया. यहाँ क्या आया, 80, यहाँ 95 आया, यहाँ 110 आया. क्यों आया यहाँ, क्योंकि इसने अपने आप D4 माइनस E4 कर लिया. इसने अपने आप क्या कर लिया, D5 माइनस E5. इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स. दिस इज वेरी बेसिक्स इन एक्सेल. दीज आर द बेसिक थिंग्स इन एक्सेल एंड which is very important. Anybody have some doubt? Got it. Very good. Rest student, please confirm. Is it clear? एक दो स्टूडेंट बोल दो तो so that I can understand कि हाँ समझ आ रहा है. Please answer. Clear. Very good. Very good. Thank you, Vibhasha. Thank you. Thank you, Washim. Thank you. Thank you. Thank you so much. Now next. अब ये तो समझ में आ गया. Now
Suppose you want to insert here one more column. आपको परचेज के पहले एक और, क्योंकि कॉलम हमेशा लेफ्ट में इंसर्ट होता है, ये ध्यान रखना, जहां आपका कर्सर है उसके लेफ्ट में कॉलम आएगा। जैसे परचेज पे कर्सर है तो लेफ्ट में कॉलम आएगा। अब कॉलम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटायर कॉलम, एक कॉलम इंसर्ट कर दिया। देन ओपनिंग स्टॉक, ओके, राइट नाउ इट इज 0। अब मैं इसको हटा रही हूँ। राइट नाउ इट इज 0। देन द फॉर्मूला शुड बी अपडेटेड, क्या? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल। एंड यही ओपनिंग स्टॉक कहां चला जाएगा? यही ओपनिंग स्टॉक आपका कहां चला जाएगा? नेक्स्ट में क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हटा लूं, है ना, यहां पे आ जाएगा। सो इज इक्वल टू दिस। नाउ ड्रैग इट, अब सबको ड्रैग कर लो, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। ये भी ड्रैग कर लिया और इसको भी ड्रैग कर लिया। ये देखो, ये देखो आप, ये क्या था 80, अब ये क्या हो गया 175। क्यों? 80 प्लस 220 300, 300 माइनस 125 175 आ गया ना। हाउ आई हैव टेकन, यहाँ पहले क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स, और यहाँ पे क्या ले लिया, इसका रेफरेंस ले लिया, इज इक्वल टू F3। तो जब नीचे जाएगा तो अपने आप इज इक्वल टू F4 F5 करेगा ना। इसको भी ट्रैक कर लो, इसको भी ट्रैक कर लो, अपने आप हो जाएगा। आई एम श्योर यू गॉट इट। सेल रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, समझ में आया इस एक्सरसाइज के थ्रू? आई एम श्योर यू गॉट इट। व्हाट इज सेल रेफरेंस, व्हाट इज रिलेटिव रेफरेंस? इज इट क्लियर? कितने स्टूडेंट्स ने ये बना लिया? कितने स्टूडेंट्स ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट बना लिया? नाउ आई वांट परचेज रिटर्न, एक और मुझे कॉलम डालना है, तो मैं सेल्स पे कर्सर रखूंगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटायर कॉलम, एंटर। देन दिस इज PR, देन अगेन कंट्रोल शिफ्ट प्लस, देन एंटायर कॉलम, दिस इज SR सेल्स रिटर्न। अब क्या किया, यहाँ सेल्स रिटर्न 2 4 है ना, और इसको, बिकॉज सिर्फ ये एग्जाम्पल ही है इसलिए मैं सिंपल बता रही हूँ। यहाँ पे 1 3 सेल्स रिटर्न है। अब इसको डबल क्लिक कर दिया। अब स्टॉक का फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स माइनस परचेज रिटर्न, एंटर। और इसको भी आपने देखिए सारा की सारा आपका अपडेट हो गया कि नहीं? जस्ट क्रिएट, पहले बनाओ, सबसे पहले बनाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्रिएट अ वन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सबसे पहले ये बनाओ, जस्ट डू इट। डोंट लाइक कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम माय फॉर्मूला, अपना अपना बनाओ। आई एम गिविंग यू द 5 minutes, जस्ट क्रिएट इट, बनाओ अपना, क्रिएट इट योरसेल्फ। Do it fast. Everybody is creating.
Inventory management. Who can share the screen with me? Who can share the screen with me? कौन मेरे साथ शेयर कर सकता है स्क्रीन? मुझे दिखाइए. Please, students, tell me who can share the screen. Vikram, very good. Chandrasekhar, great. Who can share the screen? मुझे दिखा दो स्क्रीन एक बार. Please. Anybody can share the screen? No? So that's mean you are not working. Right? Please tell me who can share the screen. Okay, no issue, Vibhasa. Rest students, please tell me. Nobody can share the screen. But be like prepared. Anytime I can call out the name and I can say कि share करो screen को. Please be prepared है ना. मैं किसी कोई भी एक जना मुझे screen share करके बताएगा randomly I'll give the name. मैं नाम दूंगी. So be prepared. Okay, chalo, let it be. Now the thing is, here I want to calculate the scrap. क्या करना है मुझे? Scrap calculate करना है. So can I calculate directly? कैसे calculate करते हैं? मुझे इसका 10% निकालना है. So this multiplied by 0.1, enter, and then break it. This is the way how you can calculate the scrap. Okay. This is the way how you can calculate the scrap. By multiplied by 0.01. Don't type here the 10%. इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. Only 0.1. Only 0.1. So shall I move ahead? इतना हो गया. I'm working in a company. Its laptop are not allowed sharing outside the. Okay. Okay, Chandrasekhar, no issue.
Okay. So thank you so much. Thanks for the patience listening. Tomorrow we will again learn, because see, I started the Excel. So be prepared with that. अब हम लोग Excel पढ़ेंगे और we will learn the advanced formulas and everything. So thank you so much. Thanks a lot. Bye and take care.